1. Provisional. वक्ती, हंगामी, आर्जी, मशरूत, मौजूदा ज़रूरत मौका के लिए मुहैया करदा, आर्जी तौर पर कायम शुदा. Meaning, temporary, provided for the time being, not final or permanent. 2. Accord. समझौता, मुआहिदा, इत्तफाक राय, तालमेल, बाहमी रज़ामंदी, हम आहंग होना. 1. An agreement or a treaty between two or more parties. 2. Harmonious agreement or conformity. 3. To give or grant something, usually as a favor or recognition. 4. To be in agreement or to harmonize. 3. Confer. अता करना, देना, मरहमत करना, मशवरा करना, सलाह मशवरा करना. 1. To discuss something with someone in order to exchange ideas or opinions. 2. To grant or bestow something, usually a title, honor, or privilege. 3. To consult or deliberate with someone. 4. Procrastination. ढील, ताखीर, हील हुज्जत, इल्तिवा, आजकल टाल मटोल करना देर. Meaning, the act of delaying or postponing something, especially something that requires immediate attention or action. 5. Stance. मौक़िफ़, हालत, कैफियत, नुक्ता नज़र, वज़ा. Meaning, a person's attitude or point of view, especially when it is made known or expressed. 6. Limbo. गैर यकीनी की हालत ऐसी सूरत हाल में फंस जाने से मुराद है जहां कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती है. हालत फरामोशी, फरामोश, कैद खाना की सायों का आराफ. Meaning, refers to a state of uncertainty or being stuck in a situation where no progress can be made. 7. Fledge. पर लगाना है पर उगना होने के लायक करना. नौखेज परिंदे के बाल ऊपर निकलना. उड़ने के काबिल होने तक पालना. Meaning, to grow feathers and develop the ability to fly, especially in birds. 8. Suzerainty. महदूद हकमरान, इख्तिदार, बालादस्ती, हुक्म फरमाए. Meaning, suzerainty refers to a situation where one state or government has authority over another state, but the subordinate state retains some degree of autonomy. 9. Scout. जासूस, मुखबिर, खबर रसा, भेदी, सकोट बनना तलाश करना. चढ़ाना, धुतकारना, किसी ऐसी चीज के लिए मुख्तलिफ जगहों पर तलाश करने के लिए जाना जो आप चाहते हैं. Meaning, a person sent out to obtain information or to locate something, typically a member of a military or exploration unit. 10. Finalization. तकमील, हतमी शक्ल देना. Meaning, finalization refers to the act or process of making something final or complete. It is the point at which a decision, plan, or project is completed or made final. 11. Plebiscite. राय शुमारी, रेफरनडम राय शुमारी. राय आमात आम राय शुमारी, इस्तिस्वाब राय आमात, बरा रास्त राय शुमारी. Meaning, a direct vote by which the entire electorate is asked to either accept or reject a particular proposal, often concerning a constitutional matter. 12. Stonewall. जवाब ना देना, फैसला रोकना. बल्लेबाज का दिफाई तौर पर गेंद को मुसलसल रोकते रहना. Meaning, 1. To obstruct or delay by being uncooperative. 2. A barrier made of stone used for defense. 3. A nickname of the Confederate General Thomas J. Jackson. 13. Embark. नई मुहिम में शामिल होना. नया काम शुरू करना, चढ़ाना. सवार कराना. शामिल करना. शरीक होना. जहाज पर सवार होना या सवार करना. Meaning, to begin or start something, especially a new project or journey. 14. Ambiguous. मुबहम, जिसमें दो मफहूम निकलें. मशकूक, मुश्तबा, शक, गोलमोल. Meaning, open to more than one interpretation, having a double meaning, unclear or inexact. 15. Blunder.
गलती करना, फाश गलती करना, बिगाड़ना, अबतरी पैदा करना, सख्त फाश गलती, हमाकत, गलती खता लग़ज़िश. Meaning, a serious mistake, typically caused by ignorance or confusion. 16. Geopolitics. जोग्राफियाई सियासत दुनिया के ममालिक और ममालिक के ग्रोहों के माबैन सियासी ताल्लुकात, जैसा कि उनके जोग्राफिया से मुतासिर होता है. इन ताल्लुकात का मुताला. Meaning, geopolitics is the study of how geography and politics interact with each other, especially in relation to foreign policy decisions and international relations. 17. Disrupt. तहो बाला करना, खलल डालना, मुंतशिर करना, टुकड़े टुकड़े करना, चीरना, तफरीका डालना. Meaning, to interrupt or cause disorder or turmoil. 18. Rapprochement. मसलहत, मुफाहमत, तजदीद ताल्लुकात, ताल्लुकात का मकाम, किसी मुआहदे के तहत आना. Meaning, an establishment or re-establishment of harmonious relations. 19. Broker. ब्रोकर, दलाल, एजेंट, कबाड़ी, कुर्क शदा माल बेचने वाला. Meaning, a person who arranges or negotiates a settlement, agreement, or transaction between parties. 20. Moot. इस्तिमा, तलबा की मशक़ी बहस, दलाइल पेश करना, सवाल उठाना, काबिल बहस, बहस तलब, काबिल मुबाहिसा, निज़ाई, बहस करना, सवाल उठाना, नुक्ता उठाना, नज़रियाती बनाना. Meaning, 1. To raise for discussion, to propose as a topic of debate. 2. Debatable, open to argument or discussion. 3. Having no practical relevance, purely academic or theoretical. 4. A gathering or assembly, especially one held by the leaders of a Scottish clan. 21. Diplomatic. सिफारती, सियासतकाराना, किसी भी तरह के मुज़ाकरात से मुतालिक, सिफारत से मुतालिक. Meaning, relating to diplomacy or the conduct of international relations. 22. Footprint. कदम का निशान, पाँव का निशान, जूते का निशान, खुद कंप्यूटर और दूसरे मशीनी आलात के लिए मेज पर दरकार जगह. Meaning, the impression left by a foot or shoe on the ground. There appears to be a general consensus in Pakistan, across the political divide, that Gilgit-Baltistan be integrated as a provisional province. The GB committee set up by Prime Minister Nawaz Sharif recommended in March 2017 that GB be accorded a status akin to a province of Pakistan. The Supreme Court of Pakistan, in its judgment of January 2019, ordered the conferral of constitutional status and rights on GB residents at par with other citizens of Pakistan. The government of Prime Minister Imran Khan announced in November 2020 its decision to grant provisional provincial status to GB. Yet, the people of GB have not been conferred this status of being de jure citizens of Pakistan. They have repeatedly expressed, through resolutions of the GB Assembly, their desire to formally join Pakistan as a province. Pending integration, they have also demanded internal autonomy. One might argue that the reason for this procrastination has been because of possible implications for Pakistan's stance on the Kashmir dispute. Since the Kashmir dispute has not been settled either in accordance with the provisions of the Indian Independence Act of 1947 or the provisions of the UN Security Council resolutions, GB's constitutional status remains in limbo. The people of GB are disappointed that successive Pakistan governments have focused more on governance and development-related issues, rather than finding ways to recognize the people of GB as full-fledged citizens of Pakistan. Was it wise to deny the people of GB their desire all these years? We must seriously ask ourselves whether denying the people of GB their wish to join Pakistan has been a wise course of action all these years. A strong legal,
political and strategic argument can be made that further delay on this issue won't serve our national interests. Firstly, several territories within GB did not fall under the suzerainty of the Maharaja of Kashmir, and the people of these territories had already decided to join Pakistan. Gilgit, for instance, formally acceded to Pakistan in November 1947. The government of Pakistan even appointed a political agent there. Likewise, for some other territories, original accession papers were handed over to the then President of Pakistan by the wife of Major Brown, who was commanding the Gilgit Scouts. This was reported in this paper in 2002. Secondly, integrating GB into Pakistan would have no implications for the country's legal position on the Kashmir dispute because the integration would be provisional and conditional to the final settlement of the Kashmir dispute. It is akin to the provision inserted in the Pakistan-China Border Agreement of 1963, which provided for the finalization of the border subject to the settlement of the Kashmir dispute. This proviso would keep open the option of AJK and even the Kashmir Valley to join Pakistan if they so determine, and when circumstances permit. However, facts on the ground suggest that the prospects of implementing the UNSC resolutions remain dim because India is not ready to hold the plebiscite, nor is the world willing to pressure it to implement the UNSC resolutions. India has also stonewalled bilateral efforts to resolve the Kashmir dispute. The Modi government has lately embarked on the project of changing the Muslim majority status of held Kashmir through demographic and electoral engineering. A wait-and-see approach is not advisable in the face of these fast-evolving ground realities. Integrating GB would also effectively blunt the Indian argument that GB's link with Pakistan is ambiguous because it finds no mention in the constitution. Thirdly, procrastination might constitute a strategic blunder in the context of the evolving regional geopolitics. GB is the only geographical link we have with China. There is a convergence of interests between India and a major power that is currently in competition with China, and this nexus would not mind disrupting China's link with Pakistan through GB. A case in point is CPEC. GB is central to CPEC. We need GB as an integral part of Pakistan to give full constitutional protection to CPEC investments in GB as well as to attract international investments into GB, which require sovereign guarantees. Given the recent rapprochement between Saudi Arabia and Iran, brokered by China, economic and commercial activity in this region is likely to grow. One should be ready when these opportunities arise. All said and done, the moot point is the will of the people of GB, who have been living side by side with Pakistanis for 7 decades without getting their constitutional rights as citizens of Pakistan. In geopolitics as in national affairs, time is of the essence. Let there be no doubt that further procrastination on integration might be our cost to bear. The writer is a former foreign secretary and author of Diplomatic Footprints. Published in Dawn, March 25, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सियासी तकसीम से बालातर होकर इस बात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है कि गिलगित बाल्तिस्तान को आर्जी सूबे के तौर पर ज़म किया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कायम करदा गिलगित बाल्तिस्तान कमेटी ने मार्च 2017 में सिफारिश की थी कि गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान के सूबे की तरह का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2019 के अपने फैसले में गिलगित बाल्तिस्तान के रिहायशियों को पाकिस्तान के दीगर शहरियों की तरह आईनी हैसियत और हुकूक देने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने नवंबर 2020 में गिलगित बाल्तिस्तान को अबूरी सूबाई दर्जा देने के फैसले का ऐलान किया था। इसके बावजूद गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान का शहरी होने का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने बार बार गिलगित बाल्तिस्तान असेंबली की करारदादों के जरिए पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर एक सूबे के तौर पर शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इंज़माम के ज़ेर इल्तिवा उन्होंने दाखिली खुदमुख्तारी का भी मुतालबा किया है। कोई ये दलील दे सकता है कि इस ताख़ीर की वजह तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर मुमकिना असरात हैं।
चूँकि तनाज़ा कश्मीर को 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की दफ़ात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की दफ़ात के मुताबिक हल नहीं किया गया है, लिहाजा गिलगित बाल्तिस्तान की आईनी हैसियत तातुल का शिकार है। गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम इस बात से मायूस हैं कि पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतों ने गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के मुकम्मल शहरी के तौर पर तस्लीम करने के तरीक़े तलाश करने के बजाय गवर्नेंस और तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर पर ज़्यादा तवज्जो दी है। क्या इतने सालों में गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों को उनकी ख्वाहिश से इनकार करना दानिशमंदी थी? हमें संजीदगी से अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में शामिल होने की ख्वाहिश से इनकार करना उन सालों में एक दानिशमंदाना इक़दाम रहा है? एक मजबूत कानूनी, सियासी और तस्वीराती दलील दी जा सकती है कि इस मामले पर मज़ीद ताख़ीर हमारे कौमी मफादात को पूरा नहीं करेगी। पहली बात यह कि गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर कई इलाके महाराजा कश्मीर के ज़ेर तसल्लुत नहीं आए और उन इलाकों के लोगों ने पहले ही पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया था। मिसाल के तौर पर गिलगित ने नवंबर 1947 में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। यहाँ तक कि हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ एक पॉलिटिकल एजेंट भी मुकर्रर किया। इसी तरह कुछ दीगर इलाकों में भी गिलगित स्काउट्स की कमान करने वाले मेजर ब्राउन की अहलिया ने इस वक्त के सदर पाकिस्तान को इल्हाक के कागजात दिए थे। ये 2002 में इस अखबार में रिपोर्ट किया गया था। दूसरी बात यह कि गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान में ज़म करने से तनाज़ा कश्मीर पर मुख्य कानूनी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंज़माम आर्जी होगा और तनाज़ा कश्मीर के हतमी हल से मशरूत होगा। ये 1963 के पाक चीन सरहदी मुआहदे में शामिल की गई शिक की तरह है, जिसमें तनाज़ा कश्मीर के तस्किये से मशरूत सरहद को हतमी शक्ल देने का एहतमाम किया गया था। इस शिक से आज़ाद जम्मू कश्मीर और यहाँ तक के वादी कश्मीर के लिए भी पाकिस्तान में शामिल होने का ऑप्शन खुला रहेगा अगर वो चाहते हैं और जब हालात इजाज़त देते हैं। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के इम्कानात कम हैं, क्योंकि भारत इस्तिस्वाब राय कराने के लिए तैयार नहीं है और न ही दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए इस पर दबाव डालने को तैयार है। भारत ने मसला कश्मीर के हल के लिए दो तरफ़ा कोशिशों में भी रुकावटें खड़ी की हैं। मोदी हुकूमत ने हाल ही में आबादियाती और इंतखाबी इंजीनियरिंग के जरिए मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को तब्दील करने के मंसूबे का आगाज़ किया है। इन तेज़ी से बदलते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र इंतज़ार करो और देखो का नुक्ता नज़र मुनासिब नहीं है। गिलगित बाल्तिस्तान को ज़म करने से भारत की इस दलील को भी तक़वियत मिलेगी कि गिलगित बाल्तिस्तान का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ मुबहम है, क्योंकि आइन में इसका कोई ज़िक्र नहीं। तीसरी बात यह है कि बदलती हुई इलाकाई जोग्राफियाई सियासत के तनाजुर में ताख़ीर एक स्ट्रेटेजिक गलती हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान वाहिद जोग्राफियाई राब्ता है जो हमारा चीन के साथ है। भारत और एक बड़ी ताकत जो इस वक्त चीन के साथ मुसाबकत में है के दरमियान मफादात में यकसानियत है, और ये गठजोड़ गिलगित बाल्तिस्तान के जरिए चीन के पाकिस्तान के साथ राब्ते में खलल डालने से गुरेज नहीं करेगा। इसकी एक मिसाल सीपैक है। गिलगित बाल्तिस्तान सीपैक का मरकज़ है। हमें गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान का अटूट हिस्सा बनाने की ज़रूरत है ताकि गिलगित बाल्तिस्तान में सीपैक की सरमायाकारी को मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और साथ ही गिलगित बाल्तिस्तान में बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके, जिसके लिए खुद मुख्तार ज़मानतों की ज़रूरत होती है। चीन की सालसी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालिया मुफ़ाहमत के पेश नज़र इस खित्ते में इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों में इज़ाफ़े का इम्कान है। जब ये मौक़े पैदा हों तो तैयार रहना चाहिए। सब कुछ कहा और किया गया। अहम नुक्ता गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है, जो 7 दहाइयों से पाकिस्तानियों के शाना बशाना रह रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से उनके आइनी हुकूक नहीं मिल रहे हैं। जोग्राफियाई सियासत की तरह कौमी मामलात में भी वक्त का जौहर होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंज़माम में मज़ीद ताख़ीर हमारी लागत बर्दाश्त कर सकती है। मज़मून निगार साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स के मुसन्निफ़ हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 25 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary.
youtube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.